Hello everyone. Today we will discuss beautiful novel The Joys of the Motherhood. It was written by Nigerian-born novelist Buchi Emecheta, and this novel was published in 1979. And she was born in Nigeria. She wrote different books, different plays, autobiographies, and famous works are The Slave Girl, Second Class Citizen, and The Bride Price. If we will talk about the setting of this novel, was in the rural village Aboza, and the main and central character of this novel is Neo Ego, जो कि इग्बो वुमेन है। जिस तरह यूरोबा एक एथनिक ग्रुप है, इसी तरह इग्बो या इबो जो एक ट्राइब है वहाँ एग्जिस्ट करता है नाइजीरिया में। इट वाज द टाइम ऑफ 1930s एंड 1940s व्हेन द नाइजीरिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स and narrative technique of the author is the third person omniscient. What's going on in the mind and the heart of the person will tell us. And also the main theme of this novel is that in Nigeria, in African culture, the married woman fate or everything status about her depends on her children, whether she is fertile or she give the birth to the children, or procreation is the main thing which determine her whole status in the African culture, whether in the Nigerian society. And this plot revolves around the new Ego, who was the daughter of Egbadi and Ona. Abadi was the wealthy chief, and who fell in love with Ona, and Ona was also the daughter of the neighboring chief. They both got married, and they gave to the birth to the girl. Her name was New Ego, but unfortunately Ona died in delivery of the child. This novel moved from present to the past when New Ego was so much disappointed that she tried to finish her life, and she wants to jump from the bridge, from the Carter Bridge, but the person, Novako Sor, who was the Igbo man who saved her. If we will go about the further past life of New Ego culture has a strict traditions, especially for the women. And New Ego was got married 16 years with the Amato Kova, but New Ego could not bear a child from him. And after that, it's very common. Polygamy is very common in African culture. He got married with the second woman, and she bared a child. And when it was also the event in this novel when the child was crying due to the hunger, and when New Ego saw him, and she just want to offer the breastfeeding. So Amato Kova became so much you can say aggressive, and he had beaten her wife. So this is the background of this story. And also there are the different dreams they will discuss in this novel. I want to tell you one thing: in African culture, the existence of the gods and the existence of spirits is very important. In this novel they discuss about the chief spirit, who's the responsible for the good and the bad fate of a person. Similarly, no Ego was watching the different dreams, and she was watching that she was taking the child from her. So these are the things which were creating and so much complicated life of New Ego. Now she got married with Nafe, who was the laundryman of the British master Mayar couple. हस्बैंड और वाइफ थे उनके साथ, ठीक है। और ये कॉलोनियल टाइम पीरियड को डिपिक्ट करता है। और जो नाफे हैं, इट्स अवे फ्रॉम द रूरल एरिया, उसकी दूसरी जगह पे शादी होती है। तो यहाँ पे जो आदमी है हु आर सर्विंग टू द वाइट मैन, they are using the comments like that: men are here too busy being white, man servant to be man. We when mind the home, not our husband. Their manhood has been taken away from them. Shame is that they do not know. After the marriage with Nafi, she lived happily with him and started a life in the city of Lagos. I told you already that city of Lagos is very developed in its
infrastructure, railway, like that. So in Lagos, she started her own business of cigarette and match cases beside the road. And after her child death, she decided to live like a colonizer. जब उसका जो पहला बच्चा था गोजी, उसकी डेथ हो जाती है, तो शी डिसाइडेड कि जिस तरह उनका कल्चर या उसका लाइफ स्टाइल है, वाइट को ही फॉलो करो. मैन हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फीमेल, और जो फैमिली होती है उसकी. अब ये होता था कि शी वॉज ऑल्सो डूइंग द बिजनेस एंड शी वॉज आल्सो अर्निंग. लेकिन उस डेथ की वजह से उसकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ और ट्रांसफॉर्मेशन हुई. फर्स्ट अ लाइफ सन, उसके बाद शी गेव द बर्थ टू द फर्स्ट लाइफ सन. हर नेम वॉज ओशाया एंड सेकेंड सन वॉज एडम. एडम या ईडम जो था, like that. But before the birth of Edom, Nafi lost her job from the British master. अब वो जो हैं वापस चले गए हैं और उसकी जॉब ख़त्म हो गई. दे हैव टू लीव द वन रूम कंपाउंड. और उन जो वाइट लोगों को सर्व करने की वजह से ही गॉट द वन रूम, और जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली जो था उसने स्टे किया हुआ था. बट न्यू एगो गेव द बर्थ टू द ईडम इन अ स्लमी रूम, नॉट एनफ. विदाउट हर हस्बैंड दे हैड द लैक ऑफ फूड. माल न्यूट्रिशन का शिकार है. बच्चे जो थे वो खाने पीने की उनकी जो एक बुनियादी ज़रूरत है वो ही पूरी नहीं हो रही थी. थीम ऑफ मैरिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस नॉवल. द इबो सोसाइटी मैरिज मीन्स सोशल अप्रूवल. ऐसा नहीं होता यू कैन गो एंड द बॉय एंड द गर्ल कैन गॉट मैरिड. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू सेंड देयर parents, they have to do the negotiation, even they have to pay the bride price. This from the point of view of the bride. दूल्हे ने पे करनी है ब्राइड प्राइस. सो एक पूरा एक सोशल सर्कल है, एक पूरी कम्युनिटी की अप्रूवल होना ज़रूरी है. इट मीन्स लॉन्ग टर्म सर्विट्यूड एंड सेक्रीफाइस फॉर नाइजीरियन women. Basically it's depict the two type of culture values. One is the old generation like New Ego and her husband Nafe. ठीक है, they will try to follow the traditional culture. Just like that कि after the death of Nafe's brother जो था, उसकी जो wives थी, it's very common in the African culture. After the death of the brother, you have to take care of the wives of your brother. उसे एज अ प्रॉपर्टी दे कैन टेक ओवर. नाफे ने भी ऐसे किया. ड्यू टू द सोसाइटी प्रेशर एंड जजमेंट, शी सीज हर सेल्फ अ फेलियर आफ्टर द डेथ ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड. ठीक है, ये उसकी डिस्प्रेशन के किस शुरू में जब शादी के बाद वो शी वॉज अनएबल टू गिव टू द बर्थ टू द चाइल्ड, किस तरह उसकी लाइफ कितनी पैथेटिक हो गई. और अमाटकोवो ने उसे किस तरह बीटन किया और उसकी किस तरह उसकी सेपरेशन हुई. इन एग्जाम्पल 2 इन अफ्रीका मोर चिल्ड्रन मीन दैट यू आर रिच. रीजनिंग मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल जब नाफे के साथ शादी होती है, शी गॉट 2 सन्स एंड 2 ट्विन डॉटर्स. अब जो मेल चिल्ड्रन होते हैं दे हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली. ये अफ्रीकन कल्चर, नाइजीरियन या इग्बो ट्राइब के अंदर ये कॉमन जो है एक प्रैक्टिस है. लेकिन आफ्टर द गुड ग्रेड्स, जो ओशाया और जो ईडम है उसने अपने अपने रास्ते से अलग कर लिए. ओशाया को जो है ऐसा होता है कि उसे स्कॉलरशिप ऑफर होता है और वो यूएसए चला जाता है, और एडम जो होता है वो कनाडा मूव कर लेता है. उसके बाद अपने पेरेंट्स के साथ कुछ भी रब्ता नहीं रखता. इसी तरीके से नाफे की 2 डॉटर्स होती हैं, उस पर भी खुश था बिकॉज ताइवो और कहंदी. जो कहंदी होती है वो अपने जो ट्राइब है उसकी ट्रेडिशन के अगेंस्ट जाकर एक योरूबा जो एक और एथनिक ग्रुप है उसके आदमी से शादी कर लेती है. सो एज द रिज़ल्ट क्या होता है, जो ब्राइड प्राइस उसको मिलनी होती है नाफे को वो नहीं मिलती. उसकी बेटी अपनी मर्ज़ी से शादी करती है. अब कहिंदे की वजह से ये होता है कि गुस्से में आता है और फिर उसके जो फादर इन लॉ को मर्डर करने की कोशिश करता है. इस अटेम्प्टेड मर्डर में उसे 5 साल की जेल हो जाती है. और फिर इसी तरीके से जो उसकी दूसरी बेटी होती है ताइवो, वो जो होती है वो भी एक लॉयर के साथ शादी कर लेती है. सो एक पूरा थीम ऑफ मैरिज कि किस तरीके से जो न्यू जनरेशन है वो अपने ही वैल्यूज़ इंडिविजुअलिटी को प्रमोट करती है. थीम ऑफ पावर्टी, व्हेन ओशाया बिकेम इल, न्यू एगो स्केयर्ड मे ही डाइज. क्योंकि पहले उसके बच्चे की डेथ हो चुकी थी, अब वो स्केयर्ड हो जाती है. वो नेबर
में जितने भी लोग रह रहे होते हैं उसमें उनके साथ सलाम दुआ होती है। तो नेबर वगैरह को बताती है कि इस तरह से, वो कहते हैं उसे हौसला वगैरह देते हैं और बच्चे को देखते हैं तो फीवर उसे होता है। लेकिन वो नोट करती है जो नेबर में रहने वाली जो उसकी हमसाई होती है कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने खाना नहीं खाया, तो उसे जो है थोड़ा सा फूड देती है ताकि वो खा ले। माल न्यूट्रिशन की गुर्बत की वजह से वो सफ़र कर रही होती है पूरी फैमिली। अफ्रीकन कल्चर में से डजेंट मैटर यू हैव मनी और नॉट, बट यू हैव टू गिव टू द बर्थ टू द चिल्ड्रन। फिर रोल ऑफ रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाफे जो था बिकेम क्रिश्चियन, लेकिन फिर भी वो क्या करता था, फॉलो क्या करता था, पोलीगेमी और इस किस्म की जो अफ्रीकन कल्चर की ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है उनको फॉलो करता है। जैसे अदाको जो थी उसकी यंगेस्ट वाइफ थी, अदानकोवा थी, ये जो उसकी ब्रदर की बीवियाँ थी जो एज अ प्रॉपर्टी के तौर पर ही टुक केयर। तो उस उनके साथ जो है वो अपने अफ्रीकन कल्चर को और अपने जो रिलीजन है क्रिश्चियन दोनों को लेके चलता है। ऑल्दो कि क्रिश्चियनिटी के अंदर एक से ज़्यादा शादी अलाउ नहीं होती, ठीक है। सो सिस्टर इन दिस बिजनेस ऑफ शेयरिंग हस्बैंड, जब अदाको जो आती है जो बड़ी क्लावर किस्म की क्राफ्टी किस्म की वुमेन होती है, ठीक है। तो उनकी जो मैरिड लाइफ होती है नाफे की, और उसमें जो साथ न्यू एगो है उसमें कम्प्लिकेशन क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, और वो इस तरीके से इवन के दे हैव टू शेयर द सेम प्लेस both women and also the nafe. He bribed the priest. अब ये देखें किस तरीके से लोग रिलीजन को इस्तेमाल करते हैं अपने मटेरियल गेन्स के लिए, क्योंकि जब वो सेकंड टाइम जब अपनी जो है जॉब क्लोज कर जाता है तो वो उसको ब्राइबरी देता है, ब्राइब्ड करता है प्रिस्ट को ताकि वो उसकी जॉब सर्च आउट करने में हेल्प आउट करे। रोल ऑफ इबो बिलीफ एंड कल्चर, व्हेन ओशाया बिकेम सिक न्यू एगो रिटर्न टूवर्ड्स द दियाबाए, एनीवन माइट वांट टू हार्म ही आउट ऑफ जेलसी, जो उनके अकीदे हैं उसके अकॉर्डिंगली फॉलो कर रही होती है। अगर हम कंक्लूजन को देखें, द एंड ऑफ मदर वॉज वेरी पेनफुल। लास्ट डेज शी हैड फ्रिक्वेंटली बीन ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन एंड डाइड अलोन बाय द रोड साइड। बच्चे जो हैं बेटे दोनों चले कनाडा, कनाडा और दूसरा जो यूएसए चला जाता है स्कॉलरशिप के चक्कर में। बेटियां अपनी शादी कर लेती हैं तो सारी उम्र जो माँ स्ट्रगल कर रही होती है अपने हस्बैंड की जितनी प्रॉब्लम्स, उसकी पर्सनल लाइफ जो उसकी मैरिड लाइफ को भी देख रही होती है, लेकिन अपने बच्चों की टेक केयर करती है, एजुकेशन पे फोकस करती है, उनको एजुकेट करती है। लेकिन उसके बावजूद उसका जो एंड होता है वो बहुत ही पैथेटिक होता है। वो शाया केम टू नेटिव प्लेस फ्रॉम यूएसए एंड गिव द फैंसीफुल एंड लैविश funeral टू हर मदर। एट द एंड ये होता है वो अलोन जो है उसकी डेथ हो जाती है रोड के साथ, वो मैड वीमेन के तौर पर रह जाती है, अपने बच्चों का इंतज़ार करते हैं। उसके एज अ पेरेंट्स के तौर पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हैं और स्पेशली एज अ मदर के तौर पे। लेकिन जो लास्ट जो स्टेज होते है उसके जो बच्चे हैं उसका साथ नहीं देते, और आके ओशाया बस इतना करता है कि एक स्टैचू बनवा देता है वहाँ विलेज में और अपनी माँ का, और बड़ा ये फ्यूनरल एक देता है जिसे पंप एंड शो रिप्रेजेंट होती है। नाफे इन रेज अटेम्प्टेड टू मर्डर का हंदी फादर इन लव with the cutlass and sentenced to 5 years and, और ये सारी की सारी जो है वो उस चक्कर के अंदर अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहा होता है, और ये अपनी उम्र सारी अपने बच्चों पर सर्व करती है, बिजनेस करती है और सेविंग्स वगैरह करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी एट द एंड, दिस ऑल अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन, especially the African women in Nigerian society, in Igbo society, किस तरीके से उसको सफ़र करना पड़ता है, किस तरीके से she became the victim as a wife and as a mother as well. Thank you very much. I hope you understand this lecture.